हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि एट द रेट JRF ग्रुप पर। So here is the part 3 for the solution of MHSET 2023 paper, and already I have provided the two part of this paper solution. So if you haven't checked, go and check into the playlist of MHSET paper solution या previous year paper solution. Basically, this is the series where we are solving the previous year question of MSSET, and I will provide you the solution for all the previous question that I have available. And those who are preparing for the NET examination, for the SET examination, and any kind of PhD entrance examination, definitely going to help you. Other than this, if you are preparing for the KPS examination or any competitive examination in the field of computer science, this series is going to help you to learn the concept, to learn the pattern, how you can solve the question quickly within seconds. So must watch these session in a sequence, and if you have any doubt or query, you can connect with me directly my mobile number. And here is the mobile number, so you can connect with me for this. And yes, this is my brief profile. You can this one, and you should have to download this app from the Play Store, that is Rashmi at the rate JRF Guru. And from this app, you can download the free content, as well as you will get various courses that will help you crack your examination, your goal. तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें from the Play Store. And this is the channel, Telegram channel, that you can join for the MSET preparation. And if you want to prepare for the NET examination, then you can also join my another channel, that is Rashmi JRF Guru. Sorry, Rashmi JRF Guru. That you can find over the Telegram. Okay, so you will get the notification and PDF material channel. Okay, let's start. And yes, तो मैंने आपसे एक क्विज पूछा था. आई होप यू हैव आंसर्ड दैट क्विज. उन्होंने भी आंसर किया है. वेल डन, वेरी गुड. यू आर मेकिंग एफर्ट एंड यू आर एनकरेजिंग मी मेक these video solution for you. So let's have, this is the quiz question. This was the quiz question. We need to design a file system for the quiz question. So पहले इसको ही solve कर लेते हैं. We need to design a file system for image file having maximum one block size. Which of the following this is allocation method most appropriate the requirement? Now see, हमारे पास जो फाइल का साइज है वो कितना है, दैट इज ऑफ ओनली वन ब्लॉक. द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल विल बी वन ब्लॉक. So contiguous allocation, linked allocation, indexed allocation, hash allocation. The correct answer is contiguous allocation, because more at max one block only. Okay, so जिन्होंने भी ये आंसर दिया है, वेल डन. और जिन्होंने भी ट्राई किया, वेरी गुड. Keep doing, you will also learn the concept, because we just need one block na. Why to use the linked allocation and maintain the uh, detail about the link, yeah, maintain the details about the index? Why waste one block for indexing? You can directly use single block for single file. Okay, yes, the correct answer is contiguous allocation. Now we have next question. अब फैट, इसके पहले के सभी क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में अवेलेबल है. मस्ट वॉच दैट. नाउ a fat or file allocation system. This is the question A 2014. ये 2014 का क्वेश्चन है. A fat or file allocation based file system being used, and the total overhead of each entry of the fat is 4 byte. ओके, तो मतलब हम एक फाइल सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, और उस फाइल सिस्टम में जो एंट्री का साइज है दैट इज ऑफ 4 बाइट्स. Okay, got it? 4 byte. Now, given a 100 into 10 power 6 byte disk on which the file system is stored. तो हमारा जो फाइल सिस्टम जिस डिस्क पर हम स्टोर करेंगे, उस डिस्क का कैपेसिटी कितना है? 100 into 10 power 6 byte. Okay. Now, stored, and the data block size is 10 power 3 byte. में जो डेटा ब्लॉक्स हैं, इनका साइज कितना है? 10 power 3 bytes है. The maximum size of file that can be stored on the disk. इस डिस्क में आप कितनी बड़ी फाइल स्टोर कर सकते हैं?
इन यूनिट्स ऑफ 10 पावर 6 बाइट। तो मुझे 10 पावर 6 फिक्स रखना है 100 10 पावर 6 वॉट एमबी ना, ये आपका क्या है एमबी है। तो हेयर वी हैव इन दिस डिस्क कैपेसिटी, कितना लार्ज फाइल आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं इंक्लूडिंग द एंट्री फॉर द फाइल। ओके, तो यहाँ पर बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि टोटल नंबर ऑफ एंट्री वी कैन हैव, total number of entries that you can make, it is the disk capacity ना। total number of entries होगा वो कितना होगा, total disk capacity 100 10 power 6 100 MB, इसको आप क्या लिख 10 power byte, या इसको आप लिख रहे हो 100 MB, ये total disk है divided by the block size, the block size that is 10 power 3 या 1 KB power 3 सकते हैं या 1 KB 1 KB। So you will get 100 KB will be the size of entry, the number of entry कितना होगा 100 KB। Now single entry का size क्या है, the single entry size, the overhead it is 4 byte, ये given है 4 byte। तो total जो आपको overhead होगा that will be 100K in 4 byte, so it will be equal to 400 KB 100, और इसको MB में कन्वर्ट करिए get 0 MB, बस ये आपके पास ये टोटल ओवरहेड है। ओवरहेड का साइज माइनस कर दीजिए टोटल फाइल साइज से, तो यू विल गेट द लार्जेस्ट फाइल साइज। तो टोटल स्पेस कितना है, जैसे 100 MB का द डिस्क माइनस ओवरहेड कर देते हैं 0.04 MB, तो यू विल गेट द लार्जेस्ट फाइल 99.6 MB, लार्जेस्ट फाइल दैट वी कैन स्टोर हियर। कॉन्सेप्ट क्या था, टोटल एंट्री को ओवरहेड कैलकुलेट, ओवरहेड हर एक एंट्री की 4 बाइट का एक ओवरहेड क्रिएट हो रहा है, उसको हम माइनस कर देंगे सो दैट द मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल दैट वी कैन स्टोर। गॉट इट, यस दिस इज द अप्रोच। नाउ सी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, एक गेट लेवल के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आ रहे हैं। वो गेट के PYQ भी यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, विल गेट अ कोर्स इनटू माय app, that is rashmi@yaripuru, get PYQ, course on expect PYQ, that you can check क्या preparation आप continue, and उसकी कॉस्ट है सिर्फ 499, ज्यादा कॉस्ट नहीं थी। तो यहाँ क्या बोला गया, a computer has 20 physical page frame which contain the page number from 101 to 100. Now a program access the page number 1 to 100। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि we have the 20 physical frame, have 20 physical frame से 90 है ना, और which contain the pages numbered 10 to 101 है, 1 में 1, फ्रेम नंबर 2 में है, फिर फ्रेम नंबर 3 में क्या है 104 है। इस तरीके से फ्रेम नंबर 19 में जो पेज स्टोर दैट इज 120। नाउ नाउ our program access the page 1 to 100 1 to 100 in that order and repeat the access sequence thrice. Which of the following page replacement policy experience the same number of page failed as the optimal page replacement policy? So obviously देखिए, we know that least recently first in first out and last in first out, last in first out is equivalent to least recently, last in first out and first in first out, इन सब में से कोई भी पॉलिसी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के इक्विवेलेंट नहीं होती। आंसर तो बनता है मोस्ट रिसेंटली, बट वर्किंग समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैं इतना, इसमें क्या हो रहा है कि वी हैव 0 to 19 मतलब 20 फ्रेम है दैट इज होल्डिंग द पेज नंबर 101 to 120।
एक नया सीक्वेंस हमको यहाँ पर लोड 1 2 20 देन 21 22 अप टू 100 एंड 100 के बाद फिर से 1 to 100 फिर उसके बाद अगेन 1 to 100 1 to 100 तो ये जो पॉलिसी है वो किस वैलेंट होगा, तो मैं थोड़े शॉर्ट में अज्यूम कर लेती हूँ कि आई हैव 3 फ्रेम्स 0 1 एंड जो करेंटली यहाँ पर पेज लोडेड है, करेंटली लोडेड पेजेस आर अज्यूम कर लेते हैं 51 52 एंड 53 एंड वी वांट टू एक्सेस 1 2 अप टू 7 ले लेते हैं 1 2 3 7 1 2 7 एंड सो ऑन। तो सी व्हाट हैपेंड, 51 को रिप्लेस करना होगा 1 के लिए, को रिप्लेस के लिए को रिप्लेस करो 3 के लिए। नाउ यू हैव 5 6 7 5 7 तो सॉरी 4 5 6 तो फॉर पेज नंबर 4 यदि मैं ऑप्टिमल अप्रोच देखूं तो आई शुड रिप्लेस पेज नंबर 1 4 that I will not use in future, so I should replace not 1 ना। देखिए अब मैं 4 की among 1 to 3 I will use 1, I will not use 3 for the long time, so I should replace 3 for the 4 ना, I will replace 3 for the 4। तो ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है। अच्छा, क्या ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड भी है? यदि आप दूसरे एंगल से देखें तो यस 3 अभी यूज हुआ, has been used recently and now I am replacing this one, तो ये मोस्ट रिसेंटली पेज भी है। चलिए अगला देखते हैं फॉर द पेज नंबर 5, फॉर द पेज नंबर 5 5 which page I should replace 1 2 or 4, so again आप देखेंगे I am going to use 1 again 2 again 3 and 4 4 after a long time, so among these I have to make the choice for the 4 4 is again most recently used ना। तो भले आप ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट देख रहे हैं बट पेज किस पेज को रिप्लेस कर रहे हैं, यू आर रिप्लेसिंग मोस्ट रिसेंटली वन, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। गॉट इट? यदि नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, which type of encryption is preferred to encrypt the data stored on conventional hard disk? इन कन्वेंशनल हार्ड डिस्क याद रखिएगा which type of encryption technique, तो इन कन्वेंशनल हार्ड डिस्क हम यहाँ पर यूज करते हैं AES अप्रोच, AES अप्रोच दैट इज एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड दैट इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। तो हार्ड डिस्क में जो कन्वेंशन फॉलो होता है दैट इज एस एंड इट इज अ टाइप ऑफ सिमेट्रिक, आंसर होगा ऑप्शन ए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which system call replace the current process in Linux, so obviously EXEC system call replace the current process in the Linux, got it? Very good। चलिए next question, which of the following not an inter process communication mechanism, 5 redirection socket or signal to give the signal to the another process, 5 output of one process will be as an input for another process, kind of inter-process communication socket, it is used to provide the interaction between the two processes, but redirection of output to output device to a file is not a inter-process communication method, option hoga it is option B। Very good। Now the next question we have number 50, uh, Windows operating system use the following tools to protect the user application from accessing and modifying critical operating system data। नॉर्मल यूजर मोड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप भी आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कौन से दो मोड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं? नॉर्मल यूजर मोड, एडमिनिस्ट्रेटर मोड, यूजर मोड, कर्नल मोड, हार्डवेयर मोड, सॉफ्टवेयर मोड, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। यस, करेक्ट आंसर इज यूजर मोड and kernel mode are the two modes are used to provide
protect protect the user application from being accessed and modify the critical operating system. So it can, the normal user process is cannot modify the operating system. Very good. Now see next question. Now we are starting with software engineering के आपके question. In software development, Deng design structure that try to address a design and implementation complication associated with such interdependency by explicitly introducing aspect as a system characteristics. Okay, that try to address the design and implementation complication associated with such interdependency by explicitly introduce aspect as system characteristics is your aspect oriented development model. ऑप्शन डी aspect oriented. ना देखिए यहाँ aspect लिखा था and we have aspect oriented development model is the answer. Now see next question है software development process which is not one of the key questions that is answered by each team member at daily scrum meeting. Scrum meeting कॉल होती है आपके every 24 hours में among the developers. So what question they discuss? What did you do since the last meeting? तुमने last 24 hours में क्या किया? What obstacle are you encountering? Is there any problem? What is the cause of the problem encountering? And this is not discussed. Everyone, no one is knowing now. If they are knowing what is the cause, then they can solve the problem. But if there is a problem, team will solve it. They will identify the cause. What is the cause? It is not discussed in the script. And what do you plan to accomplish in the next 24 hours? So yes, it is discussed. So in 24 hours, every 24 hours इस टाइप के कुछ हैं जो इस मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं where every participant has to answer these three questions. And uh, now see next, a user is describing the real life example in the requirement gathering phase of the software development. This most appropriately represent requirement discovery technique. रिक्वायरमेंट डिस्कवरी ये कौन सी रिक्वायरमेंट डिस्कवरी टेक्निक है जिसमें हम रियल लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं टू स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट दैट वी वांट इनटू द सॉफ्टवेयर. इट इज कॉल्ड द सिनेरियो. Is called the scenario. This is the quiz for this session. Cohesion and coupling is the quiz for this session. jaldi se answer kariyega. Now, one of the you can see the option intramodule, intermodule, intermodule, intramodule, 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 intermodule, intermodule. Cohesion is intramodule and coupling is intermodule. Yeah, cohesion is intermodule, coupling is intramodule. Cohesion is intra, coupling is intra. Cohesion is inter and coupling is also inter. आंसर आपको देना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. One of the following is the most desirable when using the LOC as a size of metric. Line of code. Line of code यदि आपका साइज मेट्रिक है तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए? LOC language dependent, language independent. It can be computed before the design phase. LOC can be computed. यहाँ पर जो मोस्ट एक्यूरेट है मतलब LOC लैंग्वेज डिपेंडेंट ये तो इसके ड्रॉबैक होते हैं लिमिटेशन होते हैं बट इट शुड बी इजीली कंप्यूटेड. इट इज इजीली कंप्यूटेड. इट इज द डिजायरेबल प्रॉपर्टी. नाउ which of the following is not a size of metric? Which of the following is not a size of metric? LOC, function kind, count, program length and cyclomatic complexity. याद रखिएगा कि LOC साइज पर डिपेंड है, फंक्शन काउंट साइज पर डिपेंड है, प्रोग्राम लेंथ साइज पर डिपेंड है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द या इट इज नॉट द साइज मेट्रिक नहीं है.
Yes, now from question number 57, we will start in the next session. I hope this session is helpful for you, and please answer the quiz question that is given here. If you have any doubt, you can connect with directly at the mobile number and must join the channel to get the notification about the different classes and relevant to the net exam and all. Yes, all the very best. Continue. For any query, connect with